हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेफ टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग मास्टर क्लास में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके जॉब इंटरव्यूज, जॉब टेस्ट या वैसे भी आपके इंजीनियरिंग सिलेबस में भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर काफी अहमियत रखते हैं। सो हमारे साथ रखिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। इसमें हर पार्ट में हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। करेक्ट आंसर्स विल बी हाईलाइटेड सो दैट यू कुड रिव्यू देम इफेक्टिवली एट लेटर स्टेजेस। सो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब, जहां पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मजीद इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सो मीनवाइल, अगर आपने सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड एट यूट्यूब। वी आर आल्सो अवेलेबल एट टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड वी हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल, सो यू कैन ज्वाइन दैट। इसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी ट्रांसक्रिप्ट भी शेयर करेंगे और पीडीएफ फॉर्म भी इसकी शेयर करेंगे। सो एज आई मेंशन, दिस वीडियो सीरीज इज regarding construction management and we are discussing पार्ट वन ऑफ दिस सीरीज टुडे। शिफ्ट सिंप्लीफाइड का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप लोगों को पता है। हमारा एक चैनल है जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, मैथमेटिक्स, एग्जाम क्वेश्चंस, गेट टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन का मटेरियल और इस तरह की तमाम एजुकेशन वीडियोस अपलोड करते हैं। और करंट सीरीज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज दोबारा से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर वन in this subject is: which one of the following represents an activity? Number A, excavation of foundation. B, curing of concrete. Number C, setting of question paper. Number D, preparation of breakfast. So एक प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज के बारे में आप जानते हैं। जो भी एक माइलस्टोन्स होते हैं, जो मेजर वर्क्स होते हैं, उनको एक एक्टिविटी कहा जाता है। उसका एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है और उसकी एक ओवरऑल ड्यूरेशन होती है। तो आगे उन इन चीज़ों को मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ये काफ़ी अहमियत रखती है। सो ये कौन सी जो चार ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? सो ये तमाम एक्टिविटीज हैं किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन इज आल्सो एन एक्टिविटी। क्यूरिंग ऑफ फाउंडेशन, concrete or some other component made from concrete is also an activity, or setting of question paper is also an activity. Preparation of breakfast is an activity at households level. So all of the above is the correct option, which is E. Question number two: pick up the incorrect statement from the following. Number A, an activity of a project is denoted by an arrow on network. Number B, the tail of the arrow indicates the start of the activity. Number C, the head of the arrow indicates the end of the activity. Number D, the arrow are drawn to scale from left to right. Number E, each activity consumes a given time. So we have to pick an incorrect option, and D here is the incorrect option. These arrows are not drawn as per scale from left to right, but they are just drawn roughly. And the start of the activity is the tail of that arrow. जो head होता है वो show करता है end of the activity को, और ईच एक्टिविटी जो है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन या टाइम फ्रेम के ऊपर मुश्तमिल होती है। सो डी हियर इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, विच इज द एरो आर ड्रॉन टू स्केल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री: the technique for establishing and maintaining priorities among the various jobs of a project is known as. Option A, event flow scheduling technique. Option B, critical ratio scheduling. Option C, slotting technique for scheduling. Option D, short interval technique. So the technique for establishing and maintaining priorities among the various jobs of a project is known as critical ratio scheduling. So B is the correct option. Milestone charts were invented in the year: option A 1910, option B 1920, option C 1930, option D 1940, option E 1950. So milestone charts were invented in the year 1940. D is the correct option. Frederick W. Taylor introduced a system of working known as. Frederick W. Taylor introduced a system of working known as: option A, line organization, option B,
line and staff organization, option C, functional organization, option D, effective organization. So Frederick W. Taylor introduced a system of working known as option C, fundamental, option C, functional organization. So C is the correct option for this question. Question 6. If T dot, T naught, TP and TM are the optimistic, pessimistic, and most likely time estimates of an activity respectively, the expected time T of the activity will be. So E is the correct option. T naught plus 4TM plus TP divided by 6. So E is the correct formula for this question. In the given figure, the network of a project represents. अब इसमें देखें स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी जो है ये एक नोड है, नोड नंबर 1 है, और एंड ऑफ द एक्टिविटी जो है वो नोड नंबर 2 है, और एक्सकवेशन ऑफ फुटिंग ये जो 8 नजर आ रहा है ये 8 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं या नंबर ऑफ यूनिट टाइम, जो भी अगर डेज में एक्टिविटीज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आवर्स में कर रहे हैं, सो 8 इज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन होती है. सो ए एक्टिविटी ऑफ एन excavation of footing, option B, activity of an excavation which starts at event number 1 and ends at event number 2, option C, activity of excavation which takes 8 units of time, and option D, none of these. In the given figure, network of a project represents, C is the correct option, activity of excavation which takes 8 units of time. Pick up the PERT event from the following. Digging of foundation started, digging of foundation ended or completed, laying of concrete started, laying of concrete completed, all of the above. So all these are the PERT events or PERT activities. So E is the correct option. Question number 9. If D is the duration, ES and EF are the earliest start and earliest finish, LS and LF are the latest start and latest finish time, then the following relation holds good. D जो है वो duration है, ES और EF earliest start time और earliest finish, इसी तरह LS और LF जो है वो latest start और latest finish time है. So इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? A minus EF is equal to ES plus D, B minus LS is equal to LF minus D, C minus LF is equal to LS plus D, और इसी तरह D minus D is equal to EF minus ES. So all these are the correct options and E here is the correct option for this question. Final technical authority of a project lies with, final technical authority जिसमें technical sanction दी जाती है of a project, option A, assistant engineer, option B, executive engineer, option C, superintending engineer, option D, chief engineer. So the maximum power of any project for granting technical sanction lies with the chief engineer. So D is the correct option. Number 11, the performance of a specific task in CPM is known as, option A, dummy, option B, event, option C, activity, option D, contract. So C is the correct option, which is activity. The performance of a specific task in CPM is known as activity. C is the correct option. Number 12, pick up the correct statement from the following. Option A, the float may be positive, 0 or negative. Option B, if the float is positive and the activity is delayed by a period equal to its total float, the completion of the project is not delayed. We have to remember, we have to select the correct statement out of these. Option C, if the float of an activity is negative, delay in its performance is bound to delay the completion of the project. Option D, if the float of an activity is 0, the activity is critical and any delay in its performance will delay the whole project. So all these are the correct options in their own respective scenario. So E here is the correct option, which is all of the above. Number 13, a milestone chart, option A, shows the interdependencies of various jobs. Option B, depicts the delay of job, if any. Option C, point outgoing ahead of schedule of jobs, if any. Option D, none of these. So D is the correct option, none of these. Milestone chart is does not show the interdependencies of various jobs. Question number 14, the completion of an activity on CPM network diagram.
is generally known as option A, event, option B, node, option C, connector, option D, all of the above. The completion of an activity on critical path method CPM network diagram is generally known as event, node, as well as connector. So all these are the correct options. Question number 15. A dummy activity, option A, is artificially introduced. Option B is represented by a dotted line. Option C does not consume time. And option D, all of the above. Yes, the dummy activity is artificially introduced, shown by the dotted line, and it does not consume any time or duration. Therefore, D is the correct option for this question. Question 16. Military organization is known as option A, line organization, option B, line and staff organization, option C, functional organization, option D, none of these. So military organization is known as option A, line organization. Pick up the incorrect statement from the following. Option A, the activity is the time consuming part of a project. Option B, the beginning and end of a job are called events. Option C, the activity which consumes maximum time is called a node. Option D, logically and sequentially connected activities and events form a network. Option E, none of these. So pick up the incorrect. We have to select an incorrect statement out of these. So C is the incorrect statement, which is the activity which consumes maximum time is called node. Question number 19. Time and progress chart of a construction is also known as option A, bar chart, option B, Gantt chart, option C, modified milestone chart, option D, critical path method chart, option E, all of the above. So all these are the correct options. Time and progress chart of a construction is also known as bar chart. It is also shown in Gantt chart, modified milestone chart, and CPM. So all these are the correct options. Critical path network helps an engineer, option A, to concentrate his attention on critical activities. Option B, to divert the resources from non-critical advanced activities to the critical activities. Option C, to be cautious for avoiding any delay in the critical activities to avoid delay for overall project. And option D, all of the above. Yes, all these scenarios and options are correct. क्रिटिकल पाथ नेटवर्क के अंदर इंजीनियर को एक ऑप्शन मिलती है कि वो कंसंट्रेट करे क्रिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर, और ऐसी एक्टिविटीज जो नॉन क्रिटिकल है या एडवांस में जा रही हैं, सो उनको छोड़ के आप क्रिटिकल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, और ताकि डिलेज, अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर डिलेज होंगे सो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट भी डिले होगा. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 21. The time by which activity completion time can be delayed without affecting the start of succeeding activity is known as. ऐसा टाइम जो ओवरऑल आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्ट को डिले नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ड्यूरेशन, ऑप्शन बी, टोटल फ्लैट, ऑप्शन सी, फ्री फ्लोट, option D, interfering float. So C is the correct option, which is free float. Free float ऐसा टाइम है जो time by which activity completion time can be delayed without affecting, so जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट इफेक्ट नहीं होता या नेक्स्ट एक्टिविटी का स्टार्ट इफेक्ट नहीं होता. Number 22, the artificial activity which indicates that an activity following it cannot be started unless the preceding activity is complete is known as. Option A, event, option B, free float, option C, dummy activity, option D, constant. So C is the correct option, which is dummy activity. Henry Gantt developed bar charts for planning and scheduling of projects in year. Option A, 1880, option B, 1900, option C, 1920, option D, 1940, option E, 1950. So Henry गैंट का जो गैंट चार्ट है वो 1900 में इन्वेंट हुआ. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 24, द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस इज नोन एज. ऑप्शन ए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी, line and staff organization, option C, functional organization, and option D, effective organization. So yes, most popular जो organization है
फॉर सिविल वर्क्स वगैरह में या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. So A is the correct option. Last question for this video. The difference between the time availed to do a job and the time required to do the job is known as option A, event, option B, float, option C is duration, and option D is constraint. So B is the correct option. So this was all from our side in construction management. मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें. अगर आपको कोई फीडबैक है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें. You can send your suggestions at YouTube in comment box, and you can send me the feedback through email. Our email address is sifttechsimplified@gmail.com. So आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर प्रमोट करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.